From the very first year, our students work with the cadaver materials. They use it to practice their anatomical skills, dissection and surgical skills and many more. तो सबसे अहम बात ये हमें जानने को मिली, जैसा कि मैम ने कहा, क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले साल से ही बच्चों को रियल डेड बॉडी पे प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलता है, यानी कि कैडेवर पे। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि काफी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी ये फैसिलिटीज मुहैया नहीं की जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये है तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अहम साबित हो रही है। Can you please tell us something about the infrastructure of university and hospital facilities? The location of Krasnoyarsk Medical University main building is very convenient itself. It is located near the city center and within the walking distance of all the necessary city infrastructure, like supermarkets, pharmacies and shopping malls, etc. As for the dormitories, they are located near the main building, so also in the city center. It is, I think, very important to mention that we guarantee dormitory accommodation to all the international students. Krasnoyarsk Regional Hospital that I mentioned when we discussed the practical training and clinical exposure. It is also located within the walking distance of the dormitories and the main building of the university. The university infrastructure includes, as I already mentioned, 200 plus hospital facilities, simulation center, library, stadium, gyms, and also same within the walking distance, there are university clinics where students can get all the necessary healthcare services if they need it. They can get it for free within their medical insurance. They also do medical checkups before their practical training in the university clinics for free. तो मुझे एक बात की कुफ्त होती है कि मेरे वालिद साहब जो हज कमेटी में डायरेक्टर थे, वो जो पूरे देश में घूमते थे, वो कई बार ये कुफ्त के साथ ये बात मुझे बताया करते थे कि अकबर खान, हमारे बच्चे क्यों ऐसी कंट्रीज में MBBS के एडमिशन लेकर अपने करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं जहां पर अंडर डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जबकि उसी बजट में वर्ल्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रशिया में इतनी बढ़िया फैसिलिटीज मुहैया की जाती है। तो मेरा ये सवाल है सभी वालिदैन से कि हम हमारे बच्चों के करियर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भेज के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो भी स्टूडेंट MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो डॉक्टर बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं, हकीकत में तब्दील करने के लिए आज का ये पॉडकास्ट आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन यानी कि रहनुमाई मिलने वाली है। तो मिलिए, मैं अकबर खान AK इंटरनेशनल के डायरेक्टर की हैसियत से आपसे रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, मेरे वालिद साहब इलियास खान पठान साहब, जो कि हज कमेटी के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो अक्सर एक बात फरमाया करते थे कि हमारे आवाम के बच्चे, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सही रहनुमाई की, इल्म की और तालीम के बारे में सही इंफॉर्मेशन की। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। तो ये ख्वाब भी सिर्फ ख्वाब ना रहे, उसको हकीकत में तब्दील करने के लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अहम है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ से और मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। हम लोग इंडिया के अलग अलग राज्यों में हमारे दफ्तर से मेडिकल एडमिशन की पूरी प्रोसेस के लिए आपको हेल्प करते हैं। आपको किसी भी राज्यों में अपने नीट के स्कोर के हिसाब से इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए निःशुल्क आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट अब्रॉड में MBBS करना चाहते हैं, उनके लिए आज पूरी रहनुमाई देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है रशिया की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर एकत्रीना मैम। वेलकम एकत्रीना मैम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। Thank you. सो एकत्रीना मैम, tell us something about your university. Krasnoyarsk Medical University is a state university which is a governmental institution under the Ministry of Health of Russia. It was established in 1942. There are more than 600 international students and more than 250 Indian students. This university is very popular among Indian students, and according to the national rating, this is ranked among the top medical universities of Russia. तो जैसा कि मैम ने बताया, 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और 250 से ज़्यादा हमारे इंडियन स्टूडेंट्स अभी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हाउ डज योर यूनिवर्सिटी इंश्योर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS डिग्री दे कैन प्रैक्टिस ग्लोबली? This is a very important question because when you start looking for university abroad, the first question that you ask yourself is whether my degree will be valid in my own country or in other countries.
So before admitting the first batch of Indian students, we ensured that the university programs comply with the NMC requirements in terms of internship duration, in terms of the medium of instruction, in terms of the discipline studied. Besides, the university programs have international accreditation license, which means that the degrees that students receive after graduation, they are recognized in other countries around the world. And one more important thing to say is that our practical classes imply learning about international treatment protocols. As for practicing medicine in India, the university provides many opportunities to prepare for the FMGE exam. So the first thing is, of course, the program curriculum includes all the necessary preclinical, paraclinical, and clinical disciplines that are also covered in the exam. Our university professors are not just academicians, they are not just professors, they are also medical doctors who work with real patients, and they can teach real clinical cases to students to ensure that students get hands-on practical experience from real professionals. Besides, the university library has all the necessary access to the medical databases, global medical databases and scientific ones. It is also important to add that the university has a simulation center, which is a cutting-edge technological center equipped with different robots, virtual patients, and mannequins, and different equipment that allows students to practice different skills from the basic skills like taking care of the patient up to the very complex endoscopic surgeries. It will ensure that students not only have theoretical knowledge, they also know how to apply it by the end of their studies. And this will definitely help them prepare for the FMG exam. दोस्तों, जैसा कि मैम ने बताया, क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ना ही सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज और डॉक्टर और आला दर्जे की एजुकेशन दी जाती है, लेकिन इसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी पूरा वजन दिया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल में रियल पेशेंट्स को ट्रीट करना, जैसे कि डिसिप्लिन स्टडी करना, आफ्टर कंप्लीशन इंटर्नशिप करना, एफएमजी की गाइडलाइंस और उसके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करना, और हाँ, एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना। और जानते हैं तो चलिए एक और अहम सवाल की ओर जाते हैं, सेफ्टी और कल्चर के बारे में। मैम, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब how does your university ensures the safety, culture and environment for Indian students in your university? So when talking about safety, it is very important to mention that the location of our city itself, it's very safe, because Krasnoyarsk is located in Krasnoyarsk region, which is far away from state borders and all the disputable territories. So in terms of the political situation in the world, this city location is safe. Also, Krasnoyarsk city is safe in terms of criminal rates. They are very low, and students can be absolutely safe, and they can go outside at any time of the day, and they will know that nothing bad will happen to them. So talking about the safety of the university campus, it is definitely very safe, because the university is equipped with surveillance cameras, and every university building is equipped with a safety system which excludes any possibility of unauthorized people entering the university building and the dormitories. Dormitories are also very safe. Also, I would like to mention that boys and girls live separate in the dormitories. University dormitories have all the necessary things for students' comfort. At each floor of the dormitory, there is a kitchen where students can cook their national dishes, and there is a study room in every dormitory. There is a gym that students can use. Talking about the opportunities that students
have at our university in terms of culture and skills development and leadership would definitely provide a lot. So, for example, our Indian students organize cultural events every year. They organize Navratri celebration, Diwali celebration, and they invite other students from other countries, from Russia, other international students. And this way they tell the world about their culture, and this is a way to celebrate their culture, and university always welcomes this. There are different opportunities for students, like sports opportunities. There are more than 25 sports at the university. They can go to the gyms, they can go to the stadium, and swimming pool is also available for students. And of course, science opportunities. Indian students actually love doing research projects. They can work on their research projects with world's famous scientists, and in our university laboratories we have 5 laboratories led by world famous scientists, and students can participate in different conferences where they present the results of their research work. These conferences are a great opportunity to travel around Russia. I will explain. The conferences are held not only at the university level, they are held also at the national and international level, and students got invited to represent the university in different cities of Russia, and this way they can use this opportunity to go to a different city and explore our big country. What kind of clinical exposure and hands-on training student can expect from their MBBS journey? So clinical exposure and practical training is taken very seriously at our university. This is actually specific feature of our university, and very few universities in Russia pay so much attention to the practical training, because we believe that graduates of our university must have not only theoretical knowledge, they must know how to apply this knowledge in practice, in real work with real patients. So first of all, it is very important to say that from the very first year, our students work with the cadaver materials. They use it to practice their anatomical skills, dissection and surgical skills, and many more. As for clinical exposure and internship, our university has 200 plus affiliated hospitals, but mostly our international students do their practical training in the Krasnoyarsk Regional Hospital, which is one of the largest hospitals of Siberia. It is very technologically advanced clinical center. It has more than 2,000 patient beds, and this way students can practice their skills from the very basic ones. Students do their practical training from the very first year of study, and they practice the necessary skills for working with patients. These skills start from the very basic ones, like taking care of the patient, transporting the patient, that they do during their first year practice. And during their last year practice, they already focus on skills that are necessary for professional medical specialists. They work as an assistant of a doctor, they assist at the surgeries and perform very high skill manipulations and perform very high skill manipulations. तो सबसे अहम बात ये हमें जानने को मिली, जैसा कि मैम ने कहा, क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले साल से ही बच्चों को रियल डेड बॉडी पे प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलता है, यानी कि कैडेवर पे। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं की जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये है, तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अहम साबित हो रही है। आइए अब जानते हैं यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के बारे में। Can you please tell us something about the infrastructure of university and hospital facilities? The location of Krasnoyarsk Medical University main building is very convenient itself. It is located near the city center and within the walking distance of all the necessary city infrastructure, like supermarkets, pharmacies, and shopping malls, etc. As for the dormitories, they are located near the main building, so also in the city center. It is
I think very important to mention that we guarantee dormitory accommodation to all the international students. Krasnoyarsk Regional Hospital that I mentioned when we discussed the practical training and clinical exposure. It is also located within the walking distance of the dormitories and the main building of the university. The university infrastructure includes, as I already mentioned, 200 plus hospital facilities, simulation center, library, stadium, gyms, and also same within the walking distance. There are university clinics where students can get all the necessary healthcare services if they need it. They can get it for free within their medical insurance. They also do medical checkups before their practical training in the university clinics for free. मैम के ये जवाब में सबसे अहम बात ये जानने को मिली कि क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही डॉर्मेटरी मुहैया की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्टल पहले से मुकम्मल है। तो दोस्तों, आखिर में जैसा कि हम लोगों ने जाना, क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि रशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, जहां पर स्टूडेंट्स को बेस्ट एकेडमिक्स ना ही सिर्फ प्रोफेसर्स बट डॉक्टर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, जहां पर सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स के पूरे इंतजाम है, जहां पर हमारे हिंदुस्तान के दिखाए हुए सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, बच्चों के कल्चर और कंफर्ट की पूरी आला दर्जे से ख्याल रखा जाता है, जिसका बजट भी काफ़ी किफ़ायती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक में है, तो ना ही घंटों का सफ़र करके यूनिवर्सिटी तक जाना ये कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जाना, क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा किताबों से भरी लाइब्रेरी है, जहाँ पे 2000 से ज़्यादा बेड की हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती है, जहाँ पर ना सिर्फ प्रोफेसर्स बट डॉक्टर्स के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, जहाँ पर एफएमजी के सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ाई होती है, जहाँ पर बच्चों को यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही गवर्नमेंट हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती है। बहुत ही रेयर बात है ये। तो मुझे एक बात की कुफ्त होती है कि मेरे वालिद साहब जो हज कमेटी में डायरेक्टर थे, वो जो पूरे देश में घूमते थे, वो कई बार ये कुफ्त के साथ ये बात मुझे बताया करते थे कि अकबर खान, हमारे बच्चे क्यों ऐसी कंट्रीज में एमबीबीएस के एडमिशन लेकर अपने करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं, जहां पर अंडर डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जबकि उसी बजट में वर्ल्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रशिया में इतनी बढ़िया फैसिलिटीज मुहैया की जाती है। तो मेरा ये सवाल है सभी वालिदैन से कि हम हमारे बच्चों के करियर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भेज के, और जबकि हमारे पास ऑप्शन है वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी। सो मैम, बिफोर क्लोजर, can you please give any message to our NEET students? We welcome Indian students at Krasnoyarsk State Medical University. If your priority is hands-on practical training, clinical exposure, world-class education, numerous students opportunities, and safety, then Krasnoyarsk Medical University opens its door for you. तो दोस्तों, नीट की एग्जाम के बाद MBBS में एडमिशन लेने के लिए इंडिया के किसी भी राज्य में या फिर अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए आपके जो भी सवाल हो उसका जवाब देने के लिए मैं अकबर खान स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमेशा हाजिर हूं, जिसमें आपको MBBS एडमिशन की पूरी जानकारी निशुल्क यानी कि फ्री दी जाएगी। तो आज हमारे पॉडकास्ट में रशिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर इकतरीना मैम आए और हमें काफ़ी जानकारी दी। उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच मैम for giving us so many informations about Krasnoyarsk State Government Medical University. Thank you so much for having me. Thank you.